नहीं है, सो साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल द एनालिसिस ऑफ द लास्ट 10 ईयर। गिव मी अ सेकंड, आई कैनॉट पेस्ट हियर। Why it is not being pasted? अभी बच्चों का मैसेज आ रहा है। Yeah, there is some problem with my system right now. I'm not able to paste things. क्या करें? Hmm. अभी तो हो गया, बट आई हैव टू सी दिस इज अ प्रॉब्लम. Okay. So these are the topics in solutions chapter and these are the weightages. I want to attend the solution class. ये देखिए अभी सफिया को नहीं मैसेज किया है. Just give me a second. Who has joined now? Safia. Shahid has not joined yet. सफिया, मैं ऑडिबल? यस सर। आपको लिंक नहीं मिला था, मतलब अभी अभी मिला क्या? नहीं नहीं सॉरी, मिला था बट आई जॉइन द रॉन्ग आईडी। यू जॉइन द रॉन्ग आईडी. ओके. सॉरी।
बच्चे अभी यार इतना टाइम इतना लेट आ रहा है बच्चे यार, तो आप लोग सीरियस नहीं है क्या? कृष्णा प्रिया इज वेरी गुड। कृष्णा प्रिया इज लाइक शी ऑलवेज जॉइंस बिफोर टाइम। लेकिन उनका फिर ये होता है कि फिर बाकी बच्चों का टाइम खराब होता है। फादल, हमें ऑडिबल? यस सर। यार बहुत लेट नहीं है आप? क्या हो गया? यस सर, सॉरी फादल, सर। जी बताइए क्या हुआ? सर टाइम का ध्यान नहीं था, सॉरी सर। नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है ना फादल? ओके। यस सर, यस सर। ओके सर। सो स्टार्टिंग, ठीक है, जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन द लास्ट 10 years, ठीक है? But still, for types of solution, you just need to study one table, and in that one table, there is only one problem. That is, there is only one type of solution that is going to give you problems, और वो हम बता देंगे, ठीक है? बाकी सब you can easily do even if you don't study that particular table, ठीक है? Then expressing the concentration of solution. This is concentration terms: molarity, molality, mole fraction, parts per million. These are the main that you have to study. Now, you need to study this particular topic in order to do well in this chapter, in order to do well in the electrochemistry chapter, in order to do questions in the chemical kinetics chapter. So you cannot ignore this topic. Why? Because this is repeated in all the, if you want to do this chapter, you have to do it. Not only for this topic, for the subsequent topics also. Not only for this chapter, for the subsequent chapters also. Okay? So you cannot ignore this particular topic. Then we have solubility. Now, solubility is very small topic. Okay? Very small topic. I mean, and you can answer things even if you don't read it. ठीक है, तो उसको एक बार रीड कर लेंगे, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे. Then these are the two topics which are very important, and generally students they ignore this topic: vapor pressure of liquid and non-ideal solution. Now, no, I'm not talking about these topics, but 1.4, 1.5, there is 2 marks questions in all the papers. ठीक है? If you combine 1.4 and 1.5, you will be having 2 marks question in all the papers. Not a single paper. And all the questions are repeated questions. There are, I mean, you cannot make any new questions from here, especially from the ideal and non-ideal solution and its application, azeotropies वगैरह जो है. Then we have the colligative property. Both of these topics are inside colligative properties, है ना? So when you have colligative properties, and abnormal molar mass is a part of colligative property with Van 't Hoff fact. So you can divide this chapter into 3 parts. We have solution. सोल्यूशन में एक आपके पास बेसिक, एक आप मान लीजिए इसको. फर्स्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज मेन कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक. नेक्स्ट इज लॉज एंड एप्लीकेशन. ठीक है. लॉज एंड एप्लीकेशन मींस हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, azeotrope's ideal solution, non-ideal solution, solubility, all of these are what applications. And the third topic that you are going to have is the colligative property. Now in colligative property you are going to also have the Van 't Hoff factor, na? Colligative property or Van 't Hoff factor, I वाला part. ठीक है, Van 't Hoff factor. So these are what? These are the main topics that you have to study. Now, the type of question that will be asked. See, you will be having at least one question from this section, at least one question from this section. ठीक है, it will be there. Now, for concentration terms, it may be there, it may not be there. ठीक है, ऐसा हो सकता है लाइक सोल्यूशन, सारे के जितनी भी मार्क्स सोल्यूशन चैप्टर है सारे के सारे क्या हो जाए, यू आर गेटिंग ओनली फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स ना. मे बी दे आर नॉट आस्किंग कंसेप्ट, और 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. ठीक है, वेरी लो वेटेज फॉर कंसंट्रेशन टर्म्स, बट कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑर्डर टू डू क्वेश्चंस ऑफ लॉस एंड फॉर द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसंट्रेशन. ठीक है, so starting with the definition of solution. What is a solution? Please write with me. What is solution? It is a homogeneous mixture of 2 or more components.
2 or more components. ठीक है. The type of solution that we have to study, they are known as binary solution. Now, what are binary solution? Binary solution contains only two components. Only two components. ठीक है. Now, obviously, when you are having two components, one will be in major amount, the other will be in minor amount. One will be in larger amount, one will be in lesser amount. ठीक है. So the component which is in major amount, that is known as solvent. So what is solvent? Component in major amount. That is solvent. But for practical purposes, you will see there are many questions in which we have 68% HNO3 aqueous. You have 68% of nitric acid, but still we say that the solvent is water. Okay. So there are many. Now these definitions are not very strict definition. Okay. These are what I can say. These are like they're fluid type of definition. These are not very strict. But when they ask you what is solvent, you will say the component that is in major amount. That is solvent. And I will represent solvent as A. Okay. Capital A. NCERT ने 1 लेके चला है, आप 1 भी ले सकते हैं, but I represent it as A. And solute, I will represent it as B. This is the component in minor amount. Component in minor amount. ठीक है. आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं इसको. You have in this you will have some red particles I'm adding. Now these red particles, these are solute. The whole thing is solvent, and these two, they together form solution. They would together form solution. Now, the table that I am going to talk about is the types of solution. Even though there has been no question, अगर एक सवाल आ भी गया तो फिर types of solution के इसी टेबल से आएगा. ठीक है. So you don't need to make the table. इसमें बस एक important point है वो हम नोट करा देंगे, और that is the point that is going to be difficult, या फिर जो आपको याद नहीं रहेगा. अरे यार, this is problem. This is a problem. I don't know why it is happening. प्रोसेस मेरा लंबा हो गया, नहीं तो figure this out. ठीक है. See here. So what are the types of solution? So we have gaseous solution. क्या मतलब हुआ gaseous solution का? When they are saying gaseous solution, it means the solvent is gas. क्या मतलब हुआ? Solvent is gas, as you can see in all the cases. So you can have solute gas and solvent gas, mixture of oxygen and nitrogen. तो यहाँ पे जो air है, air is what? It is a gaseous solution. You can have liquid gas also. Chloroform mixed with nitrogen gas. Chloroform, ध्यान रखिए, chloroform you must have seen in Savdhan India, Satark India, that type of cereal. That what? How do we use chloroform? It is in a bottle and they put it in handkerchief, so it is liquid. याद है सबको? Yes or no? Please tell me, guys. ऐसे होता है ना chloroform, and they put it in the nose and they kidnap people, right? तो chloroform liquid, याद रहना चाहिए आपको. Mixed with nitrogen gas. So you can say that chloroform is what? Chloroform is the solute. B, it is mixed in solvent, that is A. ठीक है. Then solid में camphor in nitrogen gas. Camphor is what? Camphor is kapoor. I don't know whether you guys do it or not in Saudi and Middle East, but when you have to keep your winter clothes, then you put camphor in it, right? And then put it in some trunk or somewhere else, right? Yes or no? You guys do that? No. Naphthalene balls इसको बोलते हैं. Naphthalene balls. These are basically naphthalene balls, but they have similar property: camphor and nitrogen. Camphor and naphthalene balls. Okay. So similarly, you have camphor also. Camphor is also very similar to naphthalene balls. Okay.
So camphor is what? Solid in nitrogen gas. Okay, so this is what this is. Now camphor, how it is mixed in nitrogen gas? Camphor, if you are going to heat it, then it is going to sublime, है ना? And that is why it is mixed in nitrogen gas. So this is what? Solid gas. This is what? Solid gas solution. Liquid solutions, these are very easy. Oxygen dissolved in water. Each and every pond, each and every lake, each and every sea water, it is having oxygen. That's why the aquatic animals, they are able to breathe. Liquid, ethanol dissolved in water. Hopefully, no one does that here, but still, many people around the world, they do that. And ethanol, which is dissolved in water. Very basic example for liquid solution. I hope all of you guys do the next one. Glucose dissolved in water because you guys live in Middle East. है ना? तो बहुत सारे बच्चे like not dissolve glucose, but you must have dissolved tang, right? Tang is the famous thing there, right? Yes or no? Tang है क्या कुछ और हो गया? क्या क्या चल रहा है आजकल? Still tang. Tang only. Yes, sir. Tang only ना? हाँ, tang. ठीक है? तो glucose, tang, whatever it is. So it is solid inside liquid. Now the main problem that you will have is with this one. But please remember, you have seen this many times. Gas, it is dissolved in solid. Solution of hydrogen in palladium. You must have seen this in many of the reactions of organic chemistry. H2 in the presence of palladium or nickel or platinum. सबने देखा? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. बोलो भाई. Yes. है ना? सबने देखा है? So this is what solution of gas, hydrogen in what? In palladium. Palladium is solvent. ठीक है? Next is liquid solid solution. Amalgam of mercury with sodium. Now, like amalgam, you must have heard this word amalgam. एक तो reactions में आता है कभी कभी इस तरह से NaHG. ठीक है? एक तो इस तरह से आता है. एक आप लोगों ने जो बहुत देखा होगा ZnHG in the presence of HCl. This is a reagent for Clemenson reduction. वुल्फ किश्नर एक होता है, क्लीमेंशन होता है. जिंक एमालगम, दिस इज सेम थिंग. तो जिंक, यहाँ पे आपके पास क्या है? वी हैव जिंक एंड उसमें क्या हमने मिक्स किया हुआ है? आई हैव एडेड मरकरी इन इट. ठीक है? सो इफ यू रिमेंबर मरकरी एंड जिंक, मरकरी इज व्हाट? इट इज लिक्विड. जिंक इज व्हाट? जिंक इज सॉलिड. मरकरी को कहाँ मिक्स किया हुआ? हमने जिंक में मिक्स किया हुआ. ठीक है? सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इनसाइड सॉलिड. Then we have copper dissolved in gold. Copper dissolved in gold. Now, when we say dissolved, like copper is completely homogeneously mixed with gold and it will become an alloy. Okay, but still, copper, it is dissolved in gold. So whenever you have an alloy, that is actually a solid solution. So here the main important point is what? The main important point that you have to remember is the point regarding solution of H2 in palladium is H2 in palladium, है ना? H2 क्या है यहाँ पे? It is solute. Palladium क्या है यहाँ पे? Solvent. ठीक है? So this is what? This is a solid solution. इसमें solute क्या है? Solute is a gas. Solvent is a solid. ठीक है? तो बस इसको देख के जाना है, आपको लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल. ठीक है? Now moving on to the main thing, that is concentration terms. Now why is concentration important? Because when you have two different solutions, होता है ना बहुत बार, like how do you define any solution? Any solution is defined by its concentration. आप चाय जब पीते तो या तो आप बोलेंगे कड़वी हो गई है, या तो आप क्या बोलेंगे? चाय में चीनी ज्यादा हो गया है, या तो आप क्या बोलेंगे? चाय में पत्ती ज्यादा हो गई है, राइट? सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस आर कंसंट्रेशन. आपने रूह अफ़ज़ा अगर पिया है तो रूह अफ़ज़ा बोलेंगे रूह अफ़ज़ा कम हो गया यार, है ना? या फिर आप बोलेंगे चीनी तो पता नहीं, कोई बहुत लोग डालते हैं, लेकिन हाँ, आप बोलेंगे चीनी कम हो गया थोड़ा सा, है ना? सो whenever you talk about a solution, so whenever you define something ना, तो आपको उसको कंपेयर करना रहता है किसी आइडियल से. Maybe that ideal is present, maybe that ideal is not present, but still we define it in terms of something. तो खट्टा हो गया ज्यादा, मीठा हो गया ज्यादा, all of these things are talking about the amount of solute present in solution, या फिर amount of solute present in amount of solvent. आपने उन्हें अगर चाय बनाई हो या फिर अफ़ज़ा बनाया हो, आप देखिए अलग अलग किस्म से बोला जाता है. जैसे आप कितनी कप चाय बनानी है? आपको 5 कप चाय बनानी है, 4 कप चाय बनानी है, तो चाय इज अ सोल्यूशन. 5 कप चाय में कितना चाय पत्ती लगेगा? तो चाय पत्ती इज व्हाट? सोल्यूट. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शंस ऑफ सॉल्यूशंस एंड सोल्यूट. फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, हाउ मच सोल्यूट इज रिक्वायर्ड? तो सोल्यूशन सोल्यूट का कंसंट्रेशन टर्म होगा. ऑल्सो इफ यू रिमेंबर, आपको अगर 5 ग्लास पानी में कितना हम चीनी मिला, या फिर 5 ग्लास पानी में कितना ग्लूकोज मिला है,
So here we are talking about solvent. We are not talking about the end result that Ruafza we are going to make. ठीक है? So यहाँ से we can understand कि when you talk about concentration term, what is first of all concentration? Concentration. So concentration gives an idea about amount of solute present in solution or mixed with solvent. Or mixed with solvent. Make sense till here? Yes or no? Please tell me, all of you guys. Yes, sir. किसी कोई सवाल जवाब कुछ? चलिए ठीक है, फाइन. चलिए, now moving on to the main part, that is concentration terms. ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग. सेकंड स्क्रॉल क्या स्क्रोल आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप क्या देखना है? बस यही कंसंट्रेशन. डन अब मेन हेडिंग है आपके पास concentration terms. ठीक है. The first concentration term that we have to study is mass percentage. Like these, all of these concentration terms are important. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई नहीं है जो important नहीं है. Mass percentage. ठीक है. एक तो हम लोग mass percentage का how do we denote it? We denote it by percentage W by W. ठीक है, percentage W by W. So for mass percentage you will learn two things. ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए. You will study the formula that is of no use, like minimum use. No use तो बोलना सही नहीं रहेगा, minimum use. Then we will talk about the interpretation. ठीक है. So that interpretation of mass percentage, it is the most important thing that you are going to learn right now. What is mass percentage? अगर हम फॉर्मूले की बात करें, then formula is mass percentage. It is equal to mass of component, mass of a component, चाहे solvent हो चाहे solute हो. Mass of a component divided by total mass of solution, total mass of solution multiplied by 100. ये फ्रैक्शन दे देगा, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, परसेंटेज मिल जाएगा आप, है ना. नाउ अब आपसे क्या कहा हुआ है, जो मेन चीज आपको पढ़नी है, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको कोई उतना ज्यादा जरूरत नहीं. आपको सवाल दिया रहेगा इस तरह से, यू मस्ट सी समथिंग लाइक दिस. 10% W by W of NaCl aqueous. NaCl aqueous. अब इससे क्या पता चल रहा है आपको? देर आर थ्री थिंग्स दैट यू नो फ्रॉम हियर. आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा. यू कैन टेल द मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हियर सबसे पहले. उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट द मास ऑफ सोल्यूशन, और उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट द मास ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो. ठीक है, कैसे पता चलेगा देखिए. वॉट एवर द परसेंटेजेस उतना ही ग्राम लिख दीजिए आप. 10 ग्राम परसेंट. 10 ग्राम है कितने में? 100 ग्राम में. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट? टेल मी गाइस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट? 90 ग्राम. वेरी गुड, 90 grams. ठीक है. सो दिस इंटरप्रिटेशन इज नीडेड. You should not be thinking twice for this. जितना परसेंट, now W by W, that is why we are writing gram. After this we are going to learn about the volume percentage. Volume percentage में क्या होगा? ml हो जाएगा. ठीक है. कुछ नहीं सोचना आपको, सर ग्राम क्यों ले रहे हैं, सर किलोग्राम क्यों ले रहे हैं. बस परसेंटेज हम कुछ भी ले सकते हैं. I could have taken 10 kg and 100 kg also, और फिर ये 90 kg होता. All of these are percentage ना. All of these are what? Like all of these are going to give you 10% only. So we take the minimum, that is grams, and grams लेने का एक और फायदा ये होता है that you can go from grams to number of moles also. Now please see here, if you know the percentage of a particular solvent in a solution, तो आपको क्या पता है? You know the mass. If you know the mass, then you can also calculate the number of moles of the solute. Number of moles of the solute, it is equal to what? The given mass of solute divided by the
molar mass of solute. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है. Now, please remember, if you know the mass of solvent, then you can also calculate the number of moles of solvent. That will be equal to the given mass of the solvent, WA, upon the molar mass of the solvent. बात समझ में आ रही है? Yes or no? Please tell me. Yes, बोलो sir. भाई. ठीक है. अब ध्यान से देखिए. If you have been given, listen very properly. If you have been given the density of solution, क्या दिया हुआ है आपको? अगर if you have been given density, then from density you can also calculate what the volume. Volume क्या होता है? देखिए, density is mass by, density क्या होता है? mass by volume. ठीक है. तो आपके पास मास है सोल्यूशन का 100, और आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना. देखिए, दिस इज d इज इक्वल टू m बाई v, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू m बाई d. ठीक है. अगर आपको डेंसिटी दिया हुआ है, बट आई एम सेइंग डेंसिटी इज गिवन, then you can calculate volume also, that is equal to 100 upon d. बात समझ में आ रही है? This will be in what? ml. This will be in ml. ठीक है. वॉल्यूम आपको किसमें आ जाएगा? ml में आ जाएगा. So these are different things that you can calculate. डिटेल में देखेंगे जब when we are going to do questions from here. ठीक है. Now, अब यहाँ पे फॉर्मेशन, लेट अस सपोज you have कितना, मान लेते हैं आपके पास है 27% W by W of NaOH aqueous. ठीक है. अच्छा, एक और चीज आपको पता चल रहा है यहाँ से, दैट व्हाट इज द सल्यूट. सल्यूट क्या है यहाँ पे? इन द केस ऑफ फर्स्ट केस, द सल्यूट इज व्हाट? NaCl. बी क्या है? NaCl है. एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज वाटर. तो NaCl दिया हुआ है आपको, तो मोलर मास भी दिया हुआ है. समझ लीजिए आप. If they have given you NaCl, ना, उन्होंने बोल दिया NaCl, that means you should know what is the molar mass of sodium, what is the molar mass of chloride. If they have given you water, then you should know what is the molar mass of water. ठीक है. So remember these things. ये expected है that वो मान के चल रहा है कि आपको पता है. ठीक है. Now 27% of NaOH. Then you are going to tell me, first of all, you will tell me what is the mass of, in the chat, है ना? Chat में आप बताएंगे what is the mass of solute, what is the mass of solution, what is the mass of solvent. चलिए, in the chat A B C 1 2 3 कॉमा देके जैसे भी, but it should be readable too, है ना? Write this down, quickly answer. Quickly you are going to answer. I have got one timer. Sorry, I have got one answer, and I am starting the timer. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, जल्दी 15, आंसर कीजिए, जल्दी. 14, 13, 12, 11, हाँ, 10, Rabbi, yours is correct. 9, Arslan till now it is 8, correct. Yusuf, correct. 7, Very good. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. So I have not got answer from Safia. Can you please turn your mic on? Safia, no, wrong answer. Safia, can you please turn your mic on? Yes, sir. What have you answered? One second. ओह, आपने उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दिया. Yes, sir. आप सुन नहीं रहे हैं क्या? Sir, am I audible now? Yeah, you are audible, but are you listening? Yes. हाँ, पक्का सुन रहे हैं आप? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई. सफिया, अगर आप कहीं और बिजी थे तो बोल दीजिए ना. No, Tell sir. me. आप यू वर लिसनिंग ना? सो तो आपने ये नहीं देखा 10% से परसेंटेज से 10 ग्राम आया ना, और वॉल्यूम सोल्यूशन, ये तो हम बोल रहे थे. आई डोंट नो व्हाट, फिर आप क्या सुन रहे थे? आई डिड नॉट आस्क यू द मोलर मास ना. मोलर मास तो हमने नहीं पूछा. कीप योर माइक ऑन प्लीज. Yes, sir. Sorry. ठीक है. तो ध्यान से, है ना, व्हाट इज द मास? 27 ग्राम. जो परसेंटेज है मास ऑफ सोल्यूट, 27 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज 100 ग्राम इफ यू हैव बीन गिवन W by W.
मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रट लो भाई बिल्कुल बैठ के, यहाँ पे अभी 10 सेकंड देंगे, बैठ के रट लो बिल्कुल कि कैसे करना है, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव टू मच टाइम नाउ, यू कैन नॉट बी हैविंग रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ. व्हाट इज WA, टेल मी नाउ सफिया. 73. वेरी गुड, 73 ग्राम्स. चलिए एक और जल्दी से कीजिए. Again, 30 seconds for this. लिखिएगा बाद में, चैट में आंसर कीजिए पहले. 28, 27, Yes, Prabha, correct. Fine. 26, 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, Yes, Krishna 15, Priya, correct. 14, Aslan सही है अभी तक. 13, 12, Yes, Safia, correct. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अरे खातून, आपको समझ में नहीं आया. टर्न योर माइक ऑन क्विकली. Yes. नहीं आना समझ में आपको? No, sir, I understood. तो आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कैसे आंसर कर रहे हैं आप? अलग अलग आंसर कर रहे हैं क्या? 85 आया सिर्फ आपका. No, sir, I will answer it properly. व्हाट? Sir, I didn't answer it properly, sir. It's WA is equals to 85. हाँ तो WB कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए. WBS So WB is 15 gram. ओके. एंड वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन. 100. एंड WA is 85. 85. Are you writing notes? Yes, sir, I'm writing. Why you are writing? You don't have notes, solutions? Sir, I have. ठीक है, तो राइट में देखिए, मतलब हम ये कहेंगे ना कि आप नोट्स खोल के रखिए, है ना, एंड ट्राई टू इंगेज विद द क्लास मोर. आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. Okay, sir. देखिए इनपुट तो हो चुका है ना एक बार, नहीं, हमने बोला है, आपने सुना है, वो एक बार हो चुका है, करेक्ट. Yes. इट वुड बी मोर बेटर कि आपकी तरफ से अब आंसर है ना, वो रिटेंशन वाला जो पाथवे है ना, वो ज्यादा क्लियर हो जाए, जो कि आप एग्जाम में करने वाले हैं, है ना. मेक सेंस मरियम खातून? Yes, sir. ठीक है. चलिए, यू आर, ऐसा तो नहीं है ना यू आर लाइक बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है आप सोल्यूशन में, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होगा सोल्यूशंस में, है ना. Yes. हाँ ठीक है, तब फिर आप आंसर करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए ना. यू लीव द पेन एंड पेपर राइट नाउ. जब सॉल्व करने का होगा तब लिखिएगा, नोट्स मत बनाइए आप, ठीक है. Okay, sir. फाइन. एंड एक और चीज हम बोल रहे हैं, दोस्त हु हैव डन सॉल्यूशंस ना, वो ये ट्राई करेंगे कि हम आगे क्या बोलने वाले हैं. मेक सेंस? स्पेशली रबा एंड मरियम खातून, यू गाइस हैव ऑलरेडी डन ना सॉल्यूशंस विद मी, Yes, sir. ठीक है. आप ये सोचिए कि हम आगे क्या बोलने वाले हैं ना, जस्ट ट्राई टू बी अहेड ऑफ, ठीक है. तभी आपको वो रिटेंशन वाला जो पाथ है वो ज्यादा क्लियर होगा. इनपुट वाला बहुत हो गया, है ना. अब टाइम आ रहा है, बिल्कुल इट्स हाई टाइम कि वो आउटपुट वाला जो आपका पाथ है ना ब्रेन का, वो आपका बिल्कुल, वो न्यूरल नेटवर्क जो है ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल क्या बोले हम, ऐसे फील्ड में ऐसे रास्ता बना नहीं रहता है. आप लोगों ने बुक्स वगैरह में देखा होगा, या फिर किसी का गांव गए होंगे तो देखा होगा, खेतों के बीच में ऐसा रास्ता रहता है, कितना क्लियर पाथ रहता है. तो दैट पाथ विल बी, शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है. तो आप सोचिए, मतलब हम क्या बोलने वाले हैं, हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हम क्या पूछने वाले हैं, ठीक है. ट्राई टू फायर दोज न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन, ठीक है. चलिए मूविंग ऑन. ये केमिस्ट्री पढ़ने का ना बेस्ट तरीका है. जो लोग लाइक, अगर आपको पता है कि हम ये कर लिया, रिवाइज करने टाइम ये सारी चीज आप ना दिमाग में रखिएगा कि सर क्या बोलने वाले हैं, आगे क्या सवाल करेंगे, अब ये सर सर ये सवाल करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद आपका बिल्कुल चैप्टर वैसा हो जाएगा जैसे हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, उस तरह बिल्कुल आपका चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है. चलिए मूविंग ऑन. अब ऐसे दिमाग में आप लोग आना चाहिए कि अब हमने ये मास परसेंटेज पढ़ लिया है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम परसेंटेज. सेकंड टॉपिक इज वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज विल हैव अ वेरी सिमिलर फॉर्मूला एज दैट ऑफ मास परसेंटेज, वो हम लिखने नहीं वाले हैं, है ना. वो आप खुद से ध्यान लगा के कर लेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है. नाउ वॉल्यूम परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन हम जरूर लिखेंगे.
That for example, if they are giving volume percentage is shown by percentage V by V, and if they have given in some question, you see 10 percentage V by V of ethanol aqueous, ठीक है. So what does this mean? यहाँ से भी आपको तीन चीज पता चलेगी. You will understand what is the volume of solute, then you will also understand what is the volume of solution, and you will also understand what is the volume of solvent. ठीक है. अब ये सारे आंसर्स जो लोग नहीं, those who are doing the solution for the first time, उनके पास भी आंसर आना चाहिए. ठीक है. बस यूनिट हम बता दे रहे हैं, ये ml में होगा. So can you guys please answer this? What will be the VB, V solution and volume of A solvent? Try कीजिए जरा. I'm giving you guys 30 seconds once again. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, Send your answers in chat. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, Arslan unit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ठीक है. Most all of you guys have answered correctly. बस असलान का यूनिट थोड़ा सा ये हो गया. हाँ, 10 ml volume of solution will be 100 ml and volume of the solvent will be 90 ml. ठीक है. So from here you have known the volume of all the components and the solution also. No need to do any questions. Next है आपके पास mass by volume percentage. The third one is mass by volume percentage. Mass by volume percentage. How will we show this? Percentage W upon V. Now, if you have been given like this, let us suppose 15 percentage NaCl. No, wait a second. 15 percentage W upon V NaCl aqueous. ठीक है. So इसका मीनिंग क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं. Its meaning is 15 gram of NaCl is dissolved in rather I should write it like this, not dissolved in, rather is present in 100 ml of solution. So when you have been given mass by volume percentage, this will only give you two data. It will give the mass of solute that is equal to 15 gram, and it will give you the volume of solution that is equal to 100 ml. ठीक है. इसके अलावा it is not going to give you any data about the solvent, because one thing we have in mass and the other thing is in volume. ठीक है. So you cannot say 100 minus 15. 100 minus 15 क्या? आप ml में से ग्राम माइनस ही नहीं कर सकते. You must have learned this in the first class or the first chapter of physics in 11th standard. Unit, dimensions and measurement. Addition, subtraction can only be done when the units are same. बात समझ में आ रही है? सोनो प्लीज टेल मी. याद है कि नहीं याद है? अरे बोलो भाई. Yes, sir. याद है? ठीक है. तो प्लस और माइनस, तो here you are going to get only two data points, the mass of solute and the volume of solution only. Make sense? Sono please tell me. Yes, sir. चलिए, next is parts per million. Right, the fourth one, parts per million. ठीक है. इसमें बच्चों को ना जनरली कंफ्यूजन होता है, बट आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि कंफ्यूजन कहाँ से है. आप बिल्कुल वर्ड पे चले जाइए. परसेंट, जब परसेंट होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? परसेंट होता है तो किस चीज को आपको मार्क्स मिलता है ना. हाँ, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टेल मी गाइस. Hundreds. बोलो. जैसे किसी के नंबर आए हैं 400 आउट ऑफ 500, तो दिस इज तो फ्रैक्शन. इसको परसेंट में लाना है तो क्या करेंगे? इनटू 100. मेक सेंस? ये सुनो, ऐसे ही करते हैं ना. Yes, sir. पर मिलियन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर फ्रैक्शन को? बोलो. पर मिलियन में किससे मल्टीप्लाई कर? मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आई? ठीक है. तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर व्हाट पार्ट्स. पार्ट्स में बात करेंगे तो पार्ट्स मतलब
मतलब वॉल्यूम मास कुछ वट एवर कॉम्बिनेशन कैन बी यूज, पार्ट्स ऑफ अ कॉम्पोनेंट, parts of a component divide by total parts of all components in solution. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ऑक्सीजन इन वाटर, एंड ऑक्सीजन इट्स मास इज इतना, द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इज इतना, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन डिवाइड बाई कर दिया, तो फ्रैक्शन आ गया। और पर मिलियन के लिए क्या करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई बाई मिलियन, मिलियन हैज 6 zeros, तो 10 to the power 6, and you will get the answer in what, you will get the answer in ppm। ठीक है, इसी के साथ साथ एक सवाल कर लीजिए यहाँ पे, if 11 gram of oxalic acid is dissolved in 500 ml of solution and they have given density is equal to 1.1 gram per ml, what is the mass percentage and concentration of oxalic acid in ppm। ठीक है, दोनों में निकालना है आपको। ठीक है, सो आई विल शो यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन डेटा। जब भी आपके पास वर्ड आ जाए, सी इन दिस पर्टिकुलर क्लास 11 सॉरी 12 स्टैंडर्ड, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, इन दोज न्यूमेरिकल्स वर्ड्स डू नॉट मैटर टू मच। ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू गाइस रिमेंबर और नॉट, बट इन थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर दैट वाज इन क्लास 11, वर्ड्स मैटर टू मच, टू मच मतलब टू मच, बहुत ज्यादा मैटर करता था। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड प्रेशर बोल दिया है तो वहां पे 22.4 लीटर्स आ जाता था, 1 बार प्रेशर आ जाता था, तो 1 बार प्रेशर दिया ही हुआ नहीं है कहीं पे, इट इज नॉट नेवर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन 1 बार प्रेशर, बट दे हैव सेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर 273 केल्विन आ जाता था, दे हैव नॉट इवन मेंशन्ड 273। So in those chapters, the words they had a lot of importance, but in these chapters, solutions and electrochemistry, words do not have too much importance। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, बहुत सिंपल सिंपल से आपके पास आंसर्स आएंगे। They are saying if 11 gram of oxalic acid is dissolved, that means they have been given the mass of solute that is equal to 11 grams. Next thing that they have given is dissolved in 500 ml of solution. That means they have given the volume of solution. So volume of solution is equal to 500 ml, and they have also given the density. So they have given density. Density is equal to 1.1 gram per ml. So whenever density is given and mass or volume में से कोई एक चीज दिया हुआ है, then you can calculate the other thing and you will calculate the other thing. Whether it is needed or it is not needed, it doesn't matter. ठीक है, आप लोग calculate जरूर करें। So if density and volume has been given, then I can calculate the mass also. So mass of what? Mass of solution. Please remember, we are going to calculate the mass of solution. So what is the relation? Density it is equal to what? Density it is equal to mass by volume. So mass will be equal to density into volume. ठीक है, तो mass will be equal to density into volume. So density it is equal to 1.1 into volume it is equal to how much? 500. ठीक है, and density is given in mass gram per ml, volume is in ml, so the mass will be in terms of gram. You are not going to solve it. One more, the physical chemistry for the first time with me, you are not going to solve anything until the last step. You will keep everything as it is because आगे जाके कटने छटने के chances ज्यादा होते हैं, you can cut things. Now they are asking what is the mass percentage. So mass percentage is equal to mass of component. तो mass of component यहाँ पे क्या हो गया 11 grams। ठीक है, divide by the mass of total solution is equal to how much? 1.1 into 500, 1.1 into 500, और this whole thing will be multiplied by 100। देखिए हम एक चीज आपको ना पहले ही बता देते हैं, जनरली हमसे ना पहले स्टेप में ये 100 कई बार छूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उनको याद दिला दीजिएगा। ठीक है, many a times it would happen that I will not multiply by 100 in the first step, हमको सेकंड स्टेप में याद आता है जनरली। ओके, सो यहाँ पे आपके पास ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर रिमेनिंग,
Please try to see how I am solving the questions, how I am solving the numericals also, उसी तरह आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है? So now we have 11 upon 1.1. 1.1 can be written as 11 upon 10 into 5, ठीक है? Now 5 and this can be cancelled as 2, ठीक? Into 100 अभी भी है यहाँ पे, प्लीज डोंट फॉरगेट द into 100, ठीक है? 100 मल्टीप्लाई कभी मत कीजिएगा, 100 से डिवाइड भी कभी मत कीजिएगा, ठीक है? ऑन योर ओन, वो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी. Now we have 11 and 11 will cancel each other out. Now we are remaining with what? 1 upon 1 by 2. This 2 is in the denominator. Denominator of denominator is what? Denominator of denominator is, tell me guys, what? Denominator of denominator is numerator. ऊपर, ठीक है, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? अच्छा ये तो कट गया ना, 100 कट गया, सॉरी 100 नहीं है, इट विल बी इक्वल टू 2%. मेक सेंस? 100 कट गया था, आई फॉरगॉट अबाउट द 100, ठीक है? कितना आ गया? 2%. Now we have ppm. ppm, it is equal to same thing. 11 gram is given, so 11 gram divided by 1.1 into 500 into 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 zeros from here and 2 zeros from here. Now we are remaining with this whole thing became 2. You just saw that, huh? This whole fraction. It's the same thing that we are having here. This 500 is not there, no? इसमें से 0 कट चुका है. This zeros and sorry. Again explain how 100 got cut. ये 500 था ना, तो इसके 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट Then गया. sir 1.1 के zeros का okay sir. It's 11 by 10. हाँ, 11 by 10, ठीक है? Fractions are your friends, okay? Please remember, decimals are your destroyers. They will destroy your whole thing. तो decimals में जितना कम रहे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है? Try to change everything in friends fractions. Now this whole thing was 2 as you have seen right now. अभी हम लोगों ने calculate किया था, and this is 1, 2, 3, 4. So into 1, 2, 3, 4, 4. ठीक है? So you can write this as 2 into 10 to the power 4 ppm. ठीक है? इस तरह से आप लिख सकते हैं. This is the value for ppm. If you want to copy this down, raise your hand once you are done. आज इतना लेट कर दिया आप लोग, कुछ नहीं पढ़ पा. मोलारिटी है, सोल्यूशन मतलब सारा का सारा खत्म हो जाता है एक ही बार में. खैर कोई बात नहीं, अगले क्लास से कोई भी लेट नहीं करेगा, ठीक है? फादल, वेटिंग फॉर फादल. ठीक है. सो दिस इज पार्ट्स पर मिलियन. अब आते हैं आपके पास द मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना? कंसंट्रेशन टर्म्स के डोंट लुक दादा. सबसे पहले आएगा आपके पास मोलारिटी. दिस इज व्हाट? फोर्थ, फिफ्थ. Now molarity, it is represented by capital M. It is represented by capital M. The definition is the number of moles of solute per liter of solution. Per liter of solution. ठीक है? Per liter of solution. What is the formula? हाँ दीजिएगा स्क्रॉल अप जी. No sir, I don't want to see the answer. देख लिया आपने? Done sir. Yes sir. Yeah. So we have molarity, that is equal to M, which is equal to what? The number of moles of solute divided by the volume of solution in liters. ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे यूनिट क्या होगा इसका? द यूनिट इज गोइंग टू बी मोल्स पर लीटर, और यू कैन राइट मोल्स पर डीएम क्यूब भी हो सकता है, ठीक है? पर डीएम क्यूब. Both the units you should be aware of it. Don't use dm cube, but you should be aware dm cube भी 1 dm cube is equal to 1 liter. You should be aware of it. आप पता होना चाहिए बस, ठीक है? अब ध्यान देखते जरा. Now we know that number of moles can be written as, please see, number of moles can be written as the mass of solute divided by the molar mass of what? The molar mass of
solute. So I will substitute this value here. Now molarity will be equal to the given mass of solute divided by molar mass of the solute multiplied by volume of solution in liters. Make sense? Yes or no? Please tell me. ठीक है? Yes, sir. So generally आपको number of moles नहीं दिया रहेगा, so you have to always calculate the number of moles, है ना? तो आप क्या कीजिएगा, इसी फॉर्मूले को याद कर लीजिए सीधा. You remember this as definition. ऊपर वाले को molarity का definition याद कर लीजिए, number of moles of solute per liter of solution. This definition itself will give you this particular formula. तो formula आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So you remember this definition and this formula. Make sense? Yes or no? Please tell me, all of you guys. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से. अब इसके बाद अगला एक पॉइंट रिगार्डिंग मोलारिटी. Since molarity has volume term in it, since molarity has volume term in it and volume is temperature dependent, volume is temperature dependent, therefore molarity is also temperature dependent. Molarity is also temperature dependent. ठीक है? And this will be asked, why is molarity not a preferred concentration term? है ना? So molarity क्यों preferred नहीं है? Because it is temperature dependent. Temperature change होने से molarity किसी चीज की change हो सकती है. Now there are a few things more regarding molarity that you have to understand. एक तो आपको दिया रहेगा molarity निकालने के लिए. Sometimes you will be given the solution molarity is this much. And now the solution's molarity is this much can be represented in various terms. ठीक है? तो एक आपके पास इस तरह से आएगा कि 1 मोलर सॉल्यूशन क्या आया? 1 मोलर सॉल्यूशन. ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल आपको आ सकता है, फॉर एग्जांपल 1 मोलर NaCl aqueous. इसका एक मीनिंग होगा. व्हाट वुड इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ NaCl present in 1 liter of solution. Make sense? Yes or no? Please tell me. बोलिए, बात समझ में आ रही है? बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर वे व्हिच इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. आपको अगर ऐसे दिया हुआ है 1 मोलर, राइट इट लाइक दिस, 500 ml of 1.5 molar NaOH solution. Now if something is written in this way, then from here you can calculate the number of moles. How? Molarity, it is equal to the number of moles divided by volume. वॉल्यूम को बस आपको क्या करना है, ml से लीटर में लेके आना है ना. एंड यू कैन सी दैट नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. मोलारिटी इज इक्वल टू हाउ मच? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज व्हाट? 500 ml. दैट मींस 1/2. ठीक है. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स यू आर गेटिंग? 1.5 डिवाइड बाय 2. या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 15 डिवाइड बाय 2 मोल्स. Once you have got the moles, from moles you can calculate what? If you have been given the number of moles of the solute, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? Now mass of solute also. Mass of solute will be equal to how much? Number of moles is equal to given mass by molar mass. So mass will be the number of moles multiplied by the molar mass of the solute. ठीक है. तो यहाँ से अगर आप NaOH की बात करें, then number of moles is 15 by 20. The molar mass of NaOH is 16, 17, 40. 40. So this is to the 15 to the how much? 15 to the 30 grams of NaOH is present there. बात समझ में आ रही है? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. तो इन्होंने डेटा कितना दिया था? बस इतना ही दिया. But you have been given the moles of NaOH and you have been given, you don't have to आप सोचिए नहीं कि आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा.
दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, वो समझ रहे गिवन है, बिकॉज कैलकुलेट करने ये देते 11th स्टैंडर्ड में, व्हेन यू वेर फर्स्ट टॉट मोलारिटी। एट दैट टाइम वो क्वेश्चन बनता कि कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ 1.5 मोलर NaOH सोल्यूशन। ठीक है, राइट नाउ व्हेन दे आर सीइंग 500 ml ऑफ 1.5 मोलर NaOH सोल्यूशन, दैट मींस दे आर एक्सपेक्ट, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने दिया हुआ है आपको, दे हैव गिवन यू दिस मच मेनी मोल्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस 30 ग्राम ऑफ NaOH इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। यहाँ से सवाल, अब सवाल जो है ना स्टार्ट होगा। सो देन दिस इज नॉट द आंसर दैट यू आर गोइंग टू, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू यूज। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, सिमिलरली एक तो 1 मोलर हो गया, इसके बारे में हमने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से आपके पास और भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लाइक सेमी मोलर इज अ वर्ड। सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 मोलर। एम का मतलब तो हमने बता दिया, एम का मतलब क्या हुआ, कहीं भी आपके पास एम आ जाए दैट मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो हाफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सेमी मोलर, देन देयर इज डेसी मोलर। डेसी मोलर अगर आ गया दैट मीन्स इट इज व्हाट, 1/10 मोलर, 1/10 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डेसी मोलर। देन यू हैव सेंटी मोलर, मिली मोलर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सेंटी मोलर, centimolar is not generally used, but still I'm writing 100 m, meaning 1 by 100 moles of solute per liter of solution. Then you have millimolar, which is equal to 1 upon 1000 moles of solute per liter of solution. बात समझ में आ रही है? ये सुनो प्लीज मी गाइस। यस सर। यस। ठीक है, अब देखिए इसमें आप ना यहाँ पे लिख ही देते हैं आप लोगों को, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सेमीमोलर 0.5 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वो आप समझ लीजिएगा। 1/10 मतलब 0.1 मोल इन 1 लीटर। 1/100 का मतलब क्या हुआ, 0.01 मोल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ 0.001 मोल इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बात समझ में आ गई? हाँ जी बताएं, यस सर। आगे बढ़े। चलिए सवाल लिखिए। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, इसमें उसका मोलर मास दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 40। ठीक है, इज डिसॉल्व इन वाटर to make a solution of 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, है ना? कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनके बंदा WB 2.46, then you have given the molecular weight that is equal to 40, and you have been given the volume of solution, कितना है 100 ml, और you can write it as what, 0.1 लीटर, या फिर ये 1/10 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना? दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन, ऐसे प्लीज लिखिएगा आप लोग, है ना? सीधा फॉर्मूला मत पुट कर लेने लगे, कैलकुलेट द मोलारिटी, जो भी गिवन है उसको लिखिएगा। तभी काफी बार ऐसा होता है दैट व्हेन यू राइट द इन्फॉर्मेशन गिवन, तब फिर आपका दिमाग काम करना चालू करता है। मोलारिटी इट इज इक्वल टू, हु विल टेल मी द फॉर्मूला, फॉर्मूला बताइए। मोलारिटी इज इक्वल टू, हाँ जी, N/V। नो, क्या बोले थे हम? ओके। वो फॉर्मूला क्या रिमेंबर, WB बाई MM बाय। इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, नाउ यू कैन डायरेक्टली प्लग इन ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली प्लग इन, दैट विल बी इक्वल टू 2.46। देखिए, दैट इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट थोड़ा सा आप लोग एफर्ट लगा कि इफ यू आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, तो फिर आपके पास काफी ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इज 40 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, 1/10। सो ये molarity, it is equal to denominator of denominator is numerator, so it will be
2.46 into 10 डिवाइड बाई 40, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। एंड नाउ 2.46 डिवाइड बाई 4, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, विल बी व्हाट 0.24, 6 4 are 24, 6 4 are 24, है ना। Now, after that, what is 6 will come down, and this will be equal to so 1s are, and then we have two remaining 5, 6 1 times moles per liter. See, if you guys are having difficulty in doing this type of problems, तब आप इसमें ऐसे कीजिएगा कि here you have decimal point, ठीक है, तो you write it 246 divided by 4 into 100. अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। If you divide this 246 by 4, then it will be equal to how much? 61.5. ये कितना आएगा? 61.5. 61.5 and divided by 100 is as it is. तो ये two decimal point in that side. ठीक है, so you should be able to do these type of problems. हम क्या ही बता रहे हैं आप लोग। If you guys are done, then I will move forward. Done everyone? चलिए, moving on. Next we have molality. क्या सिक्स्थ है ये ना? I think sixth molality, which is given by small m. ठीक है, what is molality? Number of moles of solute, number of moles of solute per kg of solvent. ठीक है, so again by definition we can get a formula. Molality will be equal to number of moles of solute divided by per kg of solvent. Solvent मतलब W, है ना, mass of solvent ना, तो per WA in what kg. ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें, then unit is going to be moles kg इनवर्स और मोल्स पर केजी, और आपने इसको मोलल भी बोलते हैं, मोलल, MOLAL। उसी तरह से ना, जो ऊपर वाला था मोलारिटी, उसको मोलर भी बोलते हैं, राइट। और यू कैन आल्सो राइट इट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m ओनली। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। एक एग्जांपल हम यहीं पे दे देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव बीन गिवन 2.5 m ऑफ aqueous NaOH, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 2.5 मोल पर kg ऑफ aqueous NaOH, और if you have been given 2.5 molal aqueous NaOH, all of these things are giving you a few information. What is the information they are giving? They are giving 2.5 moles of NaOH is dissolved in, rather is mixed with 1 kg of H2O. Aqueous NaOH है, H2O. Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए,
2.5 मोल्स दिया हुआ है, 2.5 मोल्स से इफ यू हैव बीन गिवन मोल्स, NaOH का मोलर मास होता है 40, 40 into 2.5, दैट इज गोइंग टू गिव यू दी मास ऑफ सोल्यूट दैट इज एडेड इन सॉल्वेंट। अब आते हैं इसका फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। सो फॉर्मूला में यहाँ पे देख लीजिए, जनरली ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ना गिवन इन ग्राम, ठीक है। जनरली सारी चीजें किसमें दिए रहेंगे आपको, ग्राम में दिए रहेंगे। सो वी कैन राइट मोलालिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं हम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई molar mass of solute into. Now, if WA it is given in gram, then in order to convert it into kg, I have to divide this by 100, sorry, 1000. Now the molalities formula will be what? WB divided by M into MB multiplied by WA, and here it will be multiplied by 1000. ठीक है, this WA should be in grams. See, if you are able to do from the first formula, that is also fine, but it will save you a bit of time if you remember these formula, है ना। if you just start using these formula, है ना, while you are solving, आप बस इन फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रख के इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। WB upon M molar mass of solute, that is going to give you number of moles. Now WA upon 1000 था, denominator is numerator, तो 1000 ऊपर चला गया, है ना, and that is why we are having this is what WA in kg के लिए। Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. I will just write a note that since molality does not have volume term, it is independent of temperature and preferred over molarity, ठीक है। So why is molality preferred over molarity? Because molality is what? Independent of temperature, it is temperature independent। अगला है आपके पास सिक्स्थ, प्लीज राइट, सिक्स्थ, सेवेंथ इज मोल फ्रैक्शन। Seventh is mole fraction. Mole fraction, it is represented by this Greek letter या Latin letter that is known as chi, है ना। X की तरह दिखता है लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Chi बोलते हैं, chi. Now for binary solution, it is what? It is fractions of mole. Fraction of mole क्या मतलब हुआ? अगर आप chi A की बात कर रहे हैं, mole fraction of A, that means the number of moles of A divided by total number of moles. Total number of moles में क्या क्या होगा? A और B ही होगा सर। So number of moles of A plus number of moles of B. Similarly, chi B can be written as number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है। अब फ्रॉम हियर ये तो आपके पास बाइनरी सोल्यूशन हो गया। उसके बाद आता है आपके पास इन जनरल, अगर हम बात करें इन जनरल, then chi A can be written as chi of, suppose आपके पास ना n number of components है, तो for any of the ith component chi I will be equal to number of moles of the ith component divided by number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of till number of moles of n, है ना। जितने भी components उन सबको क्या करते हैं ना, ऐड कर देना, ठीक है। बट दिस इज द सेकंड फॉर्मूला इज नॉट वेरी मच यूज। 1 2 3 ही होगा, सो 3 होगा तो बस आप क्या कहेंगे, Na plus Nb plus Nc। Now one important point regarding this binary solution is what? If you do chi A plus chi B, then you will be having chi A is number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, ठीक है, plus chi B is number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. As you can see, the fractions are same, so I can combine them and I will get number of moles of A plus number of moles of B in the denominator, as well as in the numerator I will have number of moles of A plus number of moles of B. So this will give you chi A plus chi B is equal to 1. Chi A plus chi B, it is equal to 1. It means that if you
have found chi A, that means we have found chi B also, है ना? chi A और chi B के सम कितना होगा? 1 होगा हमेशा. 0.7 अगर chi A आया, then chi B is 0.3. If chi A is 0.9, chi B is 0.1. If chi B is 0.2, chi A is 0.8. ठीक है, so this relationship is very important. इसको याद रखिएगा. Chi A plus chi B is equal to 1. Please write this down. Raise your hand once you're done. एक सवाल करेंगे फिर खत्म. Anyone still write? Fadil, done? Or are you writing? Fadil, are you writing? डन सर। ठीक. अब देखिए एक सवाल है जिसको ना बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपका ये सारे के सारे जो भी कंसेप्ट है ना इंपॉर्टेंट वाले, ये सब क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज इन एनसीईआरटी. दिस क्वेश्चन regarding potassium iodide. They are saying calculate molality. They are also saying to calculate the molarity and mole fraction of Ki, पोटेशियम आयोडाइड. इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ, लेकिन हम दे देते हैं. ठीक है ना. एनसीईआरटी में देखिए कहीं पे भी मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ, बट आई विल शो यू द क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम पीवाईक्यू. सब में आपको दिया रहेगा, है ना. वेरी रेयरली दे विल नॉट गिव यू द मोलर वेट, molecular weight. So I would say that whenever you want the molecular weight, आप तुरंत बस गूगल कर लीजिए molecular weight कितना उसका और उसी को यूज कर लीजिएगा. ठीक है. बट यू शुड नो दी molecular weight of first 20 elements at least. ठीक है ना. वो एक्सपेक्टेड होता है, बट उसका फिर भी दे देते हैं. ठीक है. बोर्ड्स में फिर भी आपको molecular weight दिया रहता है. ठीक है. राइट नाउ द molecular weight of potassium iodide, it is equal to 166. ठीक. Now if molar of Ki, if the density of 20 percentage aqueous Ki by mass is 1.202 ग्राम पर ml. ठीक है. ये सवाल हम करेंगे, आप इसको घर में जाके 3 बार कर लेना. ठीक है. एक बार पढ़िएगा, खुद से कीजिएगा, फिर दोबारा विदाउट लुकिंग यू विल डू दिस क्वेश्चन एंड देन यू विल क्लोज दिस. ठीक है. उसके बाद यू विल डू इट हाफ एन आवर लेटर, या फिर आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद एक बार फिर से करने की कोशिश कर लीजिएगा. ठीक है. अभी हम कर रहे हैं. यू विल once you have copied this down, ठीक है, एक बार इसको फिर से कॉपी कीजिएगा समझ समझ के. once the class is done, then you will do it immediately without looking. then you will do it after 2 or 3 hours. ठीक है. समझिए पहले सवाल को कैसे करना है. आपको सबसे पहले डेटा लिखना है. ठीक है. so what are the data given? The data is, first of all, we have the molecular weight of solute. It is equal to how much? 166. Then we have given 20% aqueous Ki by mass. Now this is giving you plenty of information. ये क्या क्या देगा आपको? This is going to give you the mass of solute, that is equal to 20 grams. It will give you the mass of solution, that is equal to 100 gram. That is equal to 100 gram. It will give you the mass of solvent, that is equal to what? That is equal to 80 ग्राम. ठीक है. अब once you have got the mass of solute, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? You will get the number of moles of solute, that will be equal to 20 divided by the molar mass, that is equal to 166. Once you have got the molecular weight of, once you have got the given mass of solvent, you can calculate the number of moles of solvent also. That will be equal to 80 upon 18. That is the molecular weight of what? एक्वस सोल्यूशन दिया ना. एक्वस मतलब क्या हो गया? पानी, है ना.
तो आपको नंबर ऑफ मोल्स में सॉरी यू हैव आल्सो बीन गिवन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 grams. Now once you have the Na and Nb, you can easily calculate the mole fraction. आप इसी तरह चलिएगा बिल्कुल, है ना. सो काई A या काई B, आप दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं. सो काई B will be equal to what? The number of moles of solute divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. Number of moles of solute is equal to how much? 20 upon 166. Number of moles of solvent is equal to what? 80 upon 85. कितना हो जाएगा? 5 से ज्यादा नहीं, 5 5 5 18 5 सा 80, 18 5 से 80 या 90 होता है, 60, फिर उसके बाद 14 में होता है 70, 16 में होता है 80. नहीं, 80 अपॉन 18 रखना पड़ेगा और सम अदर वैल्यूज. Na will be equal to how much? 80 upon 18 plus Nb will be equal to 166. ठीक है, इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी. ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको. Once you have got the chi b, then you will see आपके पास क्या क्या है मौजूद. You have the mass, ठीक है, you have the number of moles of solute and the mass of solvent also. So from here you can calculate what? From here you can calculate the molality, which is equal to, if you remember, Wb into 1000, ठीक है, डिवाइड बाई मोलालिटी का तो यही याद रखिए. It is going to be helpful in subsequent topics. Divide by mmb into Wa in gram. Now this is equal to how much? 20 into 1000 divided by m into mb is equal to how much? 166. Molecular mass of solute, है ना? This is one thing, mmb into the mass of solvent in gram is equal to how much? 80 grams. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का बारी आ गया. ठीक है, now you can solve this. नेक्स्ट एक और चीज दी हुई थी, दैट इज डेंसिटी. ठीक है, नाउ डेंसिटी is given as 1.202. We will not take 1.202, we will take 1.2 because क्या ही फायदा 202 का. ठीक है, this is not going to matter. We will take density as 1.2. So that is the approximation that we are doing. Now once we have the density and once we have what? Once we have the mass of solution, we can calculate from here what? We can calculate the volume of solution also. Volume of solution. Density क्या होता है? Mass by volume. Volume will be equal to how much? Mass by volume. Volume जाएगा उधर, density जाएगा नीचे. That will be equal to mass by density. Volume will be equal to mass, that is 100 gram, divided by density, that is equal to 1.2. ठीक है. Now this whole thing is in what? This is a whole thing will be in ml because density is given in grams per ml. Now we can calculate the molarity. Molarity is equal to Wb divided by mb into the volume in liter. So this will be equal to Wb is equal to how much? 20 divided by 166 into volume is equal to how much? 100 upon 1.2. This whole thing is in what? Is in ml. So इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे और 1000 से, तो क्या हो जाएगा ये? और it will be in liter. ठीक है, so you can do this 20 into 1000 into 1.2 divided by 166 into 100. So from here you will get the molarity. So these are the three terms. अब इसको आराम से धीरे धीरे करके कॉपी कीजिए. Okay, copy this down. Once you have copied this down, इसको समझिएगा, फिर से एक बार समझ के फिर से कॉपी कीजिएगा, and then you will solve it also. ठीक है, then you will try solving it without looking at the notebook. उसके बाद 20 से 25 मिनट छोड़ के you will again try solving it without looking at the notebook. So this is one of the question जिससे आप जब रिवाइज करने के लिए जाए ना, तो इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए. अगर आपसे ये सवाल हो रहा है तो फिर आपका मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन